हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ओडिशा प्राइमरी स्कूल आमे पढ़िबा आज क्लास 5 रो गोटे टेस्ट रही जो रही इंग्लिश रो आज आमे गोटे टेस्ट करबा माने टेस्ट रो क्वेश्चन आंसर देखबा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन रही देखो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फर्स्ट पैसेज को पढ़िबार अछि तापर आंसर करिवार अछि। तो पैसेज पढ़िला बेले फर्स्ट आम कौन करबा, पैसेज केयरफुली रीड करबा लाइन बाय लाइन। कौन रही पैसेज रे, once a happy go lucky ant was living in a small hall. He was fond of singing and dancing. Throughout the spring, he only sang and danced. He did not store any food for winter. When writer came, he had nothing to eat. So he went to an old ant to borrow some food. तो एटा गोटे कौन स्टोरी रही पिंपुड़ी मान विषय रे, but the old ant was miser. He asked the young ant man questions. What were you doing in spring? Spring रे कौन करछो? Why did not you store food for winter? Etc. And finally he refused to lend him food. With great difficulty he managed the winter with a very little food. When spring came he did not sing and dance. He kept himself busy in collecting food and storing them for winter. तो एंट विषय थिला, एंट माने केमती फूड स्टोर करंती। तो फर्स्ट क्वेश्चन आम देखिबा, पैसेज तो पढ़ी सारे। क्वेश्चन कौन रही, आंसर द क्वेश्चंस। व्हेयर वाज द एंट लिविंग, तो एठी तो देखो आंसर लिखा है, तुमको कौन करिया को अछि, पैसेज रे आंसर खोजिबा को अछि। तो व्हेयर वाज द एंट लिविंग, द एंट वाज लिविंग इन ए स्मॉल हॉल। डायरेक्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द एंट फॉन्ड ऑफ, द एंट वाज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग। व्हाट डिड द एंट डू इन स्प्रिंग, in spring the ant only sang and danced. What happened to him in winter, in winter he had nothing to eat. तो winter रे जो सब बेले डांस कला, गीत गाइला डांस कला, तो खाया पे किछि रहलानी। Why did he go to the old ant, काहे कि ना से खाइबा मागिबा को गला। तो he want to old ant to borrow some food. Next question कौन होइछि, why did the old ant refuse him to lend food? The old ant refused to lend him to lend food because the old ant was a miser. How did the young ant spend the winter? With great difficulty the young ant managed the winter with very little food. Next question is, did the ant learn a lesson from his suffering in the winter? Yes, the ant learned a lesson from his suffering in the winter. ये थला उडे ant विषय passage. Next question रही, given below are some incomplete sentences. Complete them with suitable part sentences choosing from the alternative. तो ये ऑप्शन दिया है, से ऑप्शन हमको बचवा को होता है। young ant was fond of singing and dancing, से इस पैसेज रो पड़ी चीटा। तापरे when the young ant had no food in winter he went to an, कौन कला से, old ant to borrow some food आने में कला। when the old ant refused to lend him any food, तो से कौन कला, he managed the winter with a little food. Next रहिला when the spring came, the young collected food and stored for the winter. Next कौन रहिला, the old ant refused to lend any food to the young ant because he was a miser. ये थिला पैसेज को नहीं। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with suitable words given below in the box. तो कौन रहिला वर्ड गुडा कौन, ब्यूटीफुल, एक्सपोर्ट, डिस्टेंट, प्रिंसेस, हैंडसम, बोरो, रिफ्यूज, स्टोर। तो ताले हमें क्वेश्चन देखिबा, द यंग मैन वाज कौन, वेरी हैंडसम। सी इज एन डैश इन डांसिंग, कौथरे से डांस रे, एक्सपर्ट। आई लिव इन अ डैश प्लेस, आई लिव इन ए डिस्टेंट प्लेस। प्रियंका इज वेरी डैश टू लुक एट, प्रियंका इज वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। डू नॉट डैश मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स, डू नॉट बोरो, माने फ्रेंड पाखरु मनी आनो नाही। डैश फॉर फूड फॉर बेड डेज, स्टोर फूड फॉर बेड डेज। देखो 4 नंबर रही, राइट द अपोजिट वर्ड चूजिंग फ्रॉम ग्रुप बी फ्रॉम द ग्रुप ए, माने एटा अपोजिट वर्ड बाछवा को कौन रही, ब्यूटीफुल कौन होता है, ब्यूटीफुल अगली, प्रिंसेस रो प्रिंस, डे रो नाइट, लॉन्ग रो शॉर्ट, डिस्टेंट नियर, विलेज टाउन। तो ये थला अपोजिट वर्ड माने एंटोनिम्स कहती। नेक्स्ट होची 5 नंबर रही, ऑब्जर्व क्लासरूम एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ तुम मान काम, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन क्लास, तुम कहवा केते क्लास अच्छे, तुम क्लास रे केते जण पिला अछंती। हाउ मेनी बॉयज एंड हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास, केतेटा छुआ बॉय केतेटा छुआ गर्ल रही, तुम मान लिखो। हाउ मेनी बेंचेस टेबल्स आर देयर इन क्लास, केतरा बेंच केतरा टेबल रही, तुम मान लिखो। हाउ मेनी विंडोज एंड डोर्स आर देयर इन क्लास, केतरा झरका केतरा कबाट रही। हाउ मेनी ब्लैक बोर्ड्स आर देयर इन योर क्लास, केतरा ब्लैक बोर्ड रही है, तो मैंने सब कमेंट सेक्शन में जनइब। नेक्स्ट है 6 नंबर रही,
Teacher read out some words from the group of words given. Listen to him carefully and tick those words teacher read out 5 times. तो यहाँ को टीचर का काम एटा तुम क्लास रे करेबे एटा टेस्ट रे इनक्लूड अच्छी तो से पढ़ीदेली तापर देखो 7 नंबर तो एटा 7 नंबर भी इंपोर्टेंट हुए 8 नंबर देखो 8 नंबर देछि राइट दिज नेम्स इन इंग्लिश तो ये ओडिया रे देछि नेम आमे ताको इंग्लिश लिखा फर्स्ट वर्ड कोन रहिछि सुनामणि लिखाई छि SUNAMANI तापर लिखाई छि कोन मधुमती MADHUMATI तापर लिखाई छि कोन मिटू MITU तापर लिखाई छि सुजाता SUJATA तापर लिखाई छि डमरू DAMBARU नेक्स्ट लिखाई छि अनाम तो एटा कोन हे जो ANAMA तापर कनक एटा कोन हे जो KANKA तापर लिखाई सस्मिता SSMITA नेक्स्ट देखो 9 नंबर टे देछि रीड द फॉलोइंग स्टैंजा टेकन फ्रॉम द पोएम गुड मॉर्निंग आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो तो एटा गुड मॉर्निंग पोएम रो स्टैंजा उठाई छि कोन रहि पोएम टा गुड मॉर्निंग स्काई गुड मॉर्निंग सन गुड मॉर्निंग लिटिल winds that run गुड मॉर्निंग बर्ड्स गुड मॉर्निंग ट्रीज वेरी जेंटली विल प्ले फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखो व्हाट इज द पोएम अबाउट पोएम का विषय कहूँ द पोएम इज अबाउट ए पेट कैट हु इज आई इन द पोएम द चाइल्ड पोएट आई इन द पोएम व्हाट डज कोट रेफर टू इन दिस पोएम तो एटा देखो ए जो क्वेश्चन टा रही है गोटे आउ गोटे क्वेश्चन है एटा 9 नंबर क्वेश्चन टा नुहे कहीं सन बर्ड कथा अलग लिखाई ए क्वेश्चन एक्चुअली 10 नंबर रही 10 नंबर पोएम अनुसार एटा कौन हो द पोएम इज अबाउट ए पेट कैट द चाइल्ड पोएट आई इन द पोएम व्हाट डज कॉट रेफर्स टू इन दिस पोएम द कॉट रेफर्स टू आवर कवरिंग ऑफ पुसी इफ द चाइल्ड हर्ट्स द कैट व्हाट विल दैट कैट डू इफ द चाइल्ड हर्ट्स द कैट शी विल डू हार्म टू हिम what does the child decide not to do with the cat the child decides not to pull the cat's tail and not to drive her away थिला तापर देखो 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर देछि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो तो एठी भी से पैसेज वर्क देछि कोन रहिछि पैसेज रे मनोज वाज स्लीपिंग इन अ ट्रेन ए thief took away his suitcase the next morning Manoj friend told your suitcase is stolen I know said Manoj but it does not matter the thief will come back he cannot open it you see I have the key तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन एटा तो हम पैसेज पढ़ले मनोज विषय लिखाई छी तो पैसेज रे कौन होची फर्स्ट क्वेश्चन हु आर दे इन द स्टोरी मनोज हिज फ्रेंड थीप आर देयर इन द स्टोरी तो तीन जन रही मनोज आ सांग आउटे थीप रही तापर बी नंबर रही व्हेयर वाज मनोज स्लीपिंग मनोज वाज स्लीपिंग इन ए ट्रेन हु टुक अवे मनोज सूटकेस ए थीप टुक अवे मनोज सूटकेस तापर देखो विल द थीप कम बैक no the thief will not come back the key is with Manoj how will the thief open the suitcase the thief will open the suitcase with the master key or he will break the lock तो ये थिला 12 नंबर पैसेज नेक्स्ट हो 13 नंबर पैसेज रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन तो पैसेज कौन रही देखो आई एम ए बिग इंजिन पुट पफ 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 वेटिंग टू सेट अप चॉप 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 आई ब्लो माय व्हिसल टूट 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 the station bell is ringing ding dong dong एटा कौन कहला soon my wheels turn around and I will be homeward bound तो क्वेश्चन कौन रही what is the poem about the poem is about a big rail engine what is it waiting to do he is waiting to set up what does it blow it blows his whistle how does the station bell ring the station bell ring ding dong dong ding dong when will it wheels move its wheels एटा wheels हबो wheels लिखाई छी wheels will move soon तापर देखो नेक्स्ट रही 14 नंबर जोटा कि लास्ट क्वेश्चन पैसेज रो कौन रही पैसेज देछि हैव यू सीन palm sparrows they are also called engineer birds they make beautiful bag like nest their nest hang from tall palm trees they catch a lot of glowworms do you know why they paste wet earth on their nest and then stick the glowworm to the wet earth why do they do so the glowworms provide light to their homes तो glowworms माने जोड़ा जो जोड़ुथुआ पोको जुलजुले पोको सेउडा को से माने यूज करंती कोन देछि देखो what is the text about the text is about palm sparrows and their nest तो palm sparrow और nest विषय रे टेक्स्ट लिखा है
Where do they live? They live in their bag like nest hanging from the tall palm trees. तो ताଳ ଗଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ନେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ସେମାନେ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି। Why are palm sparrow called engineer bird? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାର୍ଡ଼ କୁହାଯାଏ? କାହିଁକି ନା palm sparrows are called engineer birds because they make beautiful bag like nest। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନେଷ୍ଟଟାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାର୍ଡ଼ସ୍। Why do they catch glowworms? They catch glowworms to stick them to the wet earth pasted on the nest. Glowworms provide them light। तो लाइट देवा जो ସେମାନେ ତାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତି glowworms ମାନଙ୍କୁ। କେମାନେ କରନ୍ତି? palm sparrows ମାନେ। Are they clever? Yes, they are clever। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାର୍ଡ଼, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଲେଭର। तो ये थिला एतिकी क्वेश्चन आंसर 14टा क्वेश्चन आंसर है। तो 10 नंबर क्वेश्चनटा आई थिंक एटी नाही, 9 नंबर पॉइंट अच्छी। तो ये टिकी खाली कन्फ्यूजन हो जदि तुमको भिडियोटी भल लगी तो निहाती शेयर कर तुम फ्रेंड मान सहित। ओडिशा प्राइमरी स्कूल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने पाखे बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन निहाती प्रेस कर। देखा नेक्स्ट वीडियो।